Now started types of chemical reaction. This is topic from chapter number 1, chemical equation and reactions. Now types of chemical reaction. First type is combination reaction. A chemical reaction in which two or more substance, compound or element, substance कौन से होंगे, that is compound or element, combine together to form a single product. Combination reaction बेटा, what is meaning of combination? To combine करना, two or more things are combined. So in this reaction, two or more chemical substances are combined together to form a single product. Next is examples of combination reaction. What are the examples? Examples of combination reaction. That is calcium oxide plus water gives calcium hydroxide. This is calcium oxide, CaO. It is also called quicklime. When you will add water to it, then slaked lime is formed. That is calcium hydroxide. So two reactants are there. And product is single. So reactants are two. On left hand side, reactants are there, and on right hand side product is there. So again students, when two chemical compounds are combined, then single product is formed. This is called combination reaction. Second is H2 plus O2 gives H2O, and 2 plus H2 gives NH3. This is ammonia in gaseous state. Nitrogen plus hydrogen gives ammonia. Next is decomposition reaction. So what is meaning of decomposition reaction? The reaction in which single substance break up into to give two or more simpler substance are called decomposition reaction. So what is this बेटा? Decompose हो जाना. एक single जो reactant है वो दो या तीन simpler compound में decompose हो जाना, break down हो जाना या split हो जाना. ठीक है? Again I am repeating, the single substance, that is chemical substance, break down to give two or more simpler substance is called decomposition. So general reaction is AB is any compound, it will split into A plus B, decompose into A plus B. So the main examples is FeSO4, ferrous sulfate. When you will heat this compound, ferric oxide plus sulfur dioxide plus SO3 sulfur trioxide is produced. Next example, potassium nitrate. When it is solid form, it is powdered form, that is solid potassium nitrate. When you will heat it in the test tube, then potassium nitrite plus oxygen will be formed. Again, single substance is break down into two, so therefore it is a decomposition reaction. Now third one is very important from examination point of view. In CBSE you will see the question of displacement reaction. The reaction in which one atom or group of atom is replaced by another atom is called displacement reaction. It is very important from examination point of view. So बेटा displace करना, displace मतलब एक ग्रुप ऑफ एटम जो है, जहाँ एटम दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. सो व्हाट इज द एग्जांपल? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट इज इन एक्वस स्टेट. एक्वस मींस डिसॉल्व्ड इन वाटर. एक्वस का क्या मतलब है? उसको वाटर में डिसॉल्व किया है, सॉल्यूशन फॉर्म है. सो इट इज ब्लू इन कलर. व्हेन यू विल ऐड जिंक metal in that solution, zinc sulfate is formed and copper is displaced. copper को displace कर दिया जाता है. Because zinc, why zinc will displace copper? Because zinc is more reactive than copper. Next is magnesium plus copper sulfate gives magnesium sulfate plus copper. Same way magnesium will replace copper from its solution. Then magnesium sulfate plus copper is formed. So this is single displacement. Single atom is there, single metal is there. ठीक है, compound नहीं है. This is single metal. इसको single displacement भी बोलते हैं. Next is
double displacement. So why I have talked about the single? Because there is another reaction that is called double displacement reaction. It is also important. The reaction in which anion and cations of two different molecules exchange and form two different compounds are called double displacement reaction. So what happens in this reaction? Double displacement, from the name it is clear, double displacement, दो बार displacement होगी. Double means दोनों atoms की. So general reaction is AB plus CD. So A will displace C, AD will be formed, and B will displace D, CB will formed. Again, the actual example is sodium sulfate plus barium chloride gives barium sulfate plus sodium chloride. Sodium sulfate plus barium chloride gives barium sulfate plus sodium chloride. Now here sodium will displace barium and barium will displace sodium. Both are displaced from its solution. That's why it is called double displacement. I have also shown you the mechanism how the reaction is proceed. That is, positive and negative sign is here. Metal will be positive and sulfate, that is polyatomic ion, that is negative. So plus barium sulfate, barium chloride, barium 2 positive, chloride is negative ion. So positive will be made by the negative. Opposite signs attract each other. The compound which is new compound will be formed, that is positive from the sodium, positive ion, and it will attach with the negative chloride. So that is barium sulfate is formed and sodium chloride is formed. Next, one more example is there. Silver nitrate plus barium chloride gives barium nitrate plus silver chloride. Now beta, you will see barium nitrate, you have put a 2. The exact formula, correct formula of barium nitrate is BaNO3 whole to the 2. It is valency of barium is 2. क्रिस क्रॉस मेथड से 2 इधर आ जाएगा. नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है, तो 1 वी हैव नॉट टू राइट 1 हियर बिकॉज बेरियम 1 ही है, 1 हम लिखते नहीं है. इट इज अंडरस्टूड दैट एटम ऑफ बेरियम इज 1 एंड नाइट्रेट पॉलीटॉमिक आयन इज 2. Why we have placed here 2? Because valency of barium is 2. It will come here by the criss-cross method. Next is oxidation and reduction. Oxidation, it is a process of gain of oxygen or lose of hydrogen. Example, carbon plus oxygen gives CO2, carbon dioxide. This is simple example. H2 plus O2 gives water. This is example of oxidation. So oxidation में gain of oxygen is there. From the name it is clear कि oxygen is adding to the substance. Reduction, it is a process of gain of hydrogen or lose of oxygen. So example is copper oxide plus H2 gives copper plus H2O. Here copper will lose the oxygen and H2 will gain the oxygen. It means हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर में रिडक्शन हो रही है. यू कैन आल्सो पुट द एरो हियर, कॉपर में रिडक्शन एंड हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हो रही है बिकॉज ऑक्सीडेशन इज एडिड ऑन द राइट हैंड साइड. सेकेंड एग्जाम्पल इज ferrous oxide plus aluminium gives Fe plus aluminium oxide. This is Fe2O3 iron oxide or ferric oxide. Ferric. So here valency of iron is 3. Now aluminium oxidation is there. aluminium में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में और आयरन में रिड्यूस हो जाएगा. ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगा. ठीक है. रिडक्शन इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ लूज ऑफ ऑक्सीजन. सो इसमें लूज हो रहा है, अल्मीनियम में गेन हो रहा है. सो दैट इज इट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर इन बोथ, अकर इन वन ओनली, वन chemical reaction. Oxidation and reduction occur in same one chemical reaction. It is also called redox reaction. इसको हम redox reaction भी बोलते हैं. Next is corrosion. Corrosion बेटा, what is corrosion? Corrosion, it is the process of slow conversion of metal into their undesirable compounds by the action of oxygen, water and other gases is called corrosion.
द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल। बेटा जब मेटल जो है, मेटल कैसे होते हैं, मेटल आर हार्ड, मेटल आर sonorous, malleable and ductile. Iron is metal, copper is used at your homes, copper is used in the utensils also, in the wires also. आयरन पिलर्स आर देयर। सो आयरन को रस्ट लग जाता है ना, जब रस्ट एक अनडिज़ायरेबल कंपाउंड है, एक केमिकल है जो आयरन और ऑक्सीजन से बनता है। सो दैट इज़ कॉल्ड रस्ट। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल। ये स्लो प्रोसेस है, इसमें मेटल जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अनडिज़ायरेबल कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर गैसेस। बेटा अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स कौन से हैं? वो ऑक्साइड भी हो सकता है, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, मेटल कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हेन आयरन आर्टिकल्स आर एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड रेडिश ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड ऑन इट्स इज कॉल्ड रस्टिंग। बेटा आयरन आर्टिकल्स जब बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होते हैं ऑक्सीजन एंड वाटर से, ठीक है, तो ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है आयरन के साथ, रेडिश ब्राउन लेयर एक फॉर्म होती है, दैट इज़ कॉल्ड रस्ट। द फार्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.XH2O। ठीक है, दिस इज़ फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, MCQ में भी आ सकता है एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनता है इसमें से। सेकेंड इज व्हेन सिल्वर आर्टिकल्स आर एक्सपोज टू एयर एंड वाटर, देन ब्लैक कलर लेयर इज़ फॉर्म्ड ऑन इट। सिल्वर आर्टिकल्स जो है, ऑर्नामेंट्स है, सिल्वर के गहने हैं, उनके ऊपर एक ब्लैक लेयर आ जाती है। इट इज़ सिल्वर सल्फाइड, AgS। स्पेलिंग देखो बेटा, ID लास्ट में लगेगा, सिल्वर सल्फाइड। सो इट इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। नाउ दीज टॉपिक्स आर completed. I think that you have noted each and everything in your fair notebook, and if there is any problem you can contact me. Yes students, now we have started types of chemical reaction. This is topic from chapter number 1, chemical equation